गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज हम ये थिएटराइजेशन और जॉइंट थिएटर्स और हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा वीडियो देखेंगे। और इस तीसरा वीडियो में हम देखेंगे कमांड एंड कंट्रोल ऑफ जॉइंट थिएटर्स, राइट। और इसके लिए मेरे साथ हैं जनरल सतीश दुआ। General Satish Dua, welcome to today evening's discussion. जय हिंद सर, जय हिंद एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें बुलाने के लिए और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। या इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं सबको बताना चाहता हूँ क्यों आज हमने जनरल सतीश दुआ को बुलाया है। जनरल सतीश दुआ was probably the last CISC, am I right? No, After there this, there was an after me also, but they were changing fast. one of the, right? और इन्होंने एज अ सिस्क, जो सिस्क का अपॉइंटमेंट था, उसके दैट वाज द अपॉइंटमेंट बिफोर द सीडीएस व्हिच हेडेड द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। और एज अ सिस्क इन्होंने पूरा जो सीडीएस का रोल क्या होगा, उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उनका क्या कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स और एमओडी, और एमओडी से नीचे कैसे ये हुक्म पास किए जाएंगे, कैसे निर्णय लिया जाएगा कि देश लड़ाई के लिए जाना है या नहीं जाना, अगर लड़ाई का हालत है तो उसको क्या कैसे करना, ये सब लिखा होता है, राइट। सोच विचार होता है, उसका सोच विचार जनरल दुआ ने काफी किया है, राइट। अगर किसी और जमाने में अगर ये सीडीएस का पहले होता तो शायद यही सीडीएस हमारे पहले होते, पर वो तो खैर सोच छोड़ दीजिए उसके बारे में। और इन्होंने जॉइंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का मेल मिलाप के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, राइट, बहुत काम किया है। और ये माना जाता है कि इन्होंने इनका काफी रोल अदा किया। और मैं देख रहा हूं कि आज उस रोल अदा करने के लिए इनका लिबास ही ऐसा ही है। और मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये जानबूझकर पर्पल कलर का शर्ट पहन के आए? अगर बेशक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली इसलिए पर्पल कलर का शर्ट पहन के आया हूँ क्योंकि ये जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, तीनों सर्विसेज के जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का मसला है। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहता हूँ लूंगा। इट्स एक फन फैक्ट है, ये जानना भी जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि पर्पल क्यों। देखिए, पर्पल जॉइंटनेस का, इंटीग्रेशन का, आर्म फोर्सेस के इंटीग्रेशन का पर्पल कलर है। सिर्फ भारत में नहीं, द वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में यही कलर है। अमेरिका में जो वुंड मेडल है तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन, सबका, वो है पर्पल हार्ट्स। हमारा परमवीर चक्र का जो रिबन है, एक प्लेन पर्पल रिबन है, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, एक प्लेन पर्पल रिबन। और पर्पल कलर ऑफ जॉइंटनेस है। जब मैं चीफ ऑफ आईडीएस था तो मैंने अपनी टाई का कलर चेंज कर दिया। आईडीएस की टाई हमने पर्पल कलर की बनाई अपने एम्बलम के साथ। तो आखिर में मैं सिर्फ ये बता के ये बात खत्म करना चाहूंगा कि पर्पल क्यों, मतलब व्हाई इज पर्पल द कलर ऑफ इंटीग्रेशन एंड वर्ल्ड ओवर। पर्पल इसलिए कि अगर आप तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके रंग को एक एक ड्रॉप मिलाएं, अगर आप डाल के देखें तो वो तीनों मिलाकर पर्पल रंग बन जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि आर्मी का ग्रीन मिलाओगे तो पर्पल कैसे बनेगा। आर्मी का रंग ग्रीन नहीं है, आर्मी का रंग रेड है, ब्लड, लाल लाल ब्लड लाल, रेड, ब्लड रेड, तो लाल है, खून के रंग से लिया गया। तो और नेवी का डार्क ब्लू है, यानी समुद्र का रंग, और एयरफोर्स का लाइट ब्लू, हल्का नीला रंग।
तो ये तीनों अगर आप मिलाते हैं तो पर्पल बनता है। इसीलिए ये विश्व में हर देश में पर्पल जो है जॉइंटनेस का, तीनों सर्विसेज के बीच के समन्वय का रंग पर्पल है। इसीलिए आज मैंने पर्पल शर्ट पहनी हुई है। बहुत अच्छी बात है, एंड इट्स अ ग्रेट सिंबॉलिक थिंग व्हिच यू हैव डन, हाउ टू मेक इंडियन आर्म फोर्सेस पर्पल, राइट। पर्पल होना, बोलना आसान है, ये सब कुछ आसान है, पर इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, और आम समझ बूझ इसके बारे में बहुत कम है। कोई बोलता है थिएटर्स, थिएटर्स के बारे में हमने 2 बार कर लिया, जॉइंटनेस के बारे में भी हमने 2 किस्से कर लिया, एक जनरल नारायणन के साथ और एक जनरल अपना एयर मार्शल सचदेवा के साथ। पर आज हम देखेंगे, हमने सोच तय कर लिया कि थिएटर्स क्या होंगे, कि नॉर्दर्न थिएटर एक होगा, एक वेस्टर्न थिएटर होगा, एक मैरीटाइम थिएटर होगा, ये तो हर अखबार में आया है। पर ये थिएटर के ऊपर क्या आकार होगा, अगर कल के दिन लड़ाई छिड़ गया तो उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या होता है और क्या होगा आगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसमें अगर हम गलती कर चुके करेंगे तो हम ठीक लड़ नहीं पाएंगे। तो पहले बार आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एट द आउटसेट, कुड यू एक्सप्लेन टू ऑल दोज हु आर सीइंग इन बहुत सरल तरीके से, एज सिंपल एज यू कैन, what is the higher defense organization in our country? What is this thing called CCS? CCS क्या होता है? वो कोई बोलता है कोर्स करेक्शन फ्यूज भी हो सकता है वो, या CCPA क्या होता है, ठीक है ना? या ये जो जार्गन that the आम आदमी अंडरस्टैंड्स, कैन यू प्लीज गिव अस ओवरव्यू? उसके बाद हम जाएंगे कमांड एंड कंट्रोल और प्लान थिएटर्स वगैरह वगैरह में। राइट, थैंक यू। देखिए, सबसे हमारे देश के नेशनल लेवल पे जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी के मामले में, वो आपने सीसीपीए का नाम लिया, सीसीएस का नाम लिया, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये 80s में सीसीपीए होता था, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, लेकिन अब आजकल वो सीसीपीए बंद हो गया है। सिक्योरिटी जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी, अब वो ज्यादा फोकस्ड है। वो पॉलिटिकल अफेयर्स में बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी का मसला आता है। और इसमें इसके मेंबर्स कौन है? अध्यक्षता प्रधानमंत्री की होती है, और इसमें मुख्य तौर पे 4 मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री, सिक्योरिटी का मामला है। गृह मंत्री, गृह इंटरनल सिक्योरिटी भी उसमें होती है। विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि डिप्लोमेसी आजकल जैसे सब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से। बल्कि हमें कई जगहों पे तो देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी को हम मतलब मिलिट्री तरीके से तय करेंगे, या इसका प्रेशर हम डिप्लोमेटिक लिवरेजेस से डालेंगे। कई ऐसे मुद्दे आते हैं या देश हालात आते हैं। और चौथा, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 4 मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ये बस इतने ही हैं, और ये कुल मिला के बनता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये सबसे हाईएस्ट अंग है, बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नीचे आती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, अब वो हो गया मंत्री लेवल पे, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए। ये जितने भी 4 मैंने 5 गिनाए, ये सब पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं। ये इलेक्शन के चुनाव से आते हैं, इनको एक्सपर्टीज नहीं है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है। अभी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल हो जाता है। वो ये चारों जरूर होते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल हो जाता है, और उसमें शामिल होता है नीति आयोग का चेयरमैन नीति आयोग। इसके अलावा उसमें इनवाइट किए जा सकते हैं केस बाय केस मेरिट पर, यानी जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही हो उसके हिसाब से और डिग्निटरी इनवाइट किए जा सकते हैं। मान लीजिए
अगर चर्चा किसी विदेशी ताकतों से लड़ाई की है या सिक्योरिटी का मसला है, तो उसमें सीडीएस या आर्मी चीफ या तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ बुलाए जा सकते हैं। वो इनवाइटेड होते हैं उस मुद्दे की डिस्कशन के लिए। उसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर नक्सलवादी अंदरूनी मसले का मामला है, तो शायद सीआरपीएफ या और बीएसएफ या और कोई भी फोर्सेस जो उसको टैकल कर रही हो, तो उसमें गृह मंत्री के साथ साथ वो भी हो सकते हैं। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट होता है। अब उसके विश्लेषण डिटेल में मैं नहीं करूंगा, मतलब उसकी डिटेल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और पोर्टेंट बॉडी है। उसके पास 4 उसमें एनएसए के अधीन होता है, लेकिन उसमें 4 एनएसए होते हैं। एक मिलिट्री एडवाइजर भी होता है, एक डिप्लोमेटिक एडवाइजर होता है, एक किसी पुलिस फोर्स का एडवाइजर। तो मतलब डिटेल में ना जाते हुए, लेकिन वो एक बड़ी ऐसी बॉडी है जो फंक्शनल लेवल पे काफी चीजों का तालमेल करती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। और दूसरी तरफ आता है एमओडी, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं इसमें, और हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन जो फोर्सेस हैं, उनका समन्वय कैसे होगा, उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कि अभी जो आजकल प्रोसेस चल रहा है वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है मोटे तौर पे हायर लेवल की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। जनरल शंकर, क्या मैं इसी के साथ में डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में No, we'll just come to the defense planning committee. Okay. Let me reiterate, because for those people who don't follow Hindi, let me put it in English. The apex body is the CCS, which has the Cabinet Committee of Security. So the first change is the CCP is out, the CCS is in, which has the Prime Minister, the Home Minister, the Raksha Mantri, the External Affairs Minister, and the Finance Minister. Then the next level is the National Security Council, in which over and above these 4 ministers, you have the NSA and the Niti Aayog chairman, plus anyone else on invitation like the CDS or the chiefs or anyone. And under this whole thing is the National Security Council Secretariat, right, which is a very powerful body, and side by side is the MOD. So these 4 basic structures form the higher defense organization. Next सवाल is, okay, ये तो ठीक है, they are there. How does defense planning go on? How does this happen? What is the defense planning organization? देखिए, अब बताइए अभी। इन प्रिंसिपल या आइडियली तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लिखी जानी चाहिए। ज्यादातर देश एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्रोमलगेट करते हैं, और उससे फिर हर मंत्रालय, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी हो, चाहे डिफेंस की मिलिट्री सिक्योरिटी हो, वो सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और उसके हिसाब से चलते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, किस तरीके से। तो उसमें गोल्स सेट होते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है, हम नहीं लिखते हैं, अभी तक हमने नहीं लिखी है, तो ये जरूरी होता है कि इन सारे मंत्रालय, खासतौर पे जो सिक्योरिटी के लिहाज से हैं, काम करते हैं, इनमें तालमेल जो है, इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सीसीएस तो ठीक है, लेकिन जैसे हमने देखा कि उसमें मंत्री लेवल के लोग ज्यादा हैं। अब तो एनएसए भी मंत्री हैं, तो मंत्री लेवल के लोग हैं। जो फंक्शनल लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे जो काम होता है, वो कैसे किया जाए इन एब्सेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है। तो नेशनल डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ये 2018 में मैं ही इसका फाउंडर सेक्रेटरी था। हमने इसके एसओपी और रूल्स लिखे, तो मैं समझाना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। नेशनल डिफेंस प्लानिंग कमेटी इसलिए इस पर्पस के लिए बनाई ताकि सेक्रेटरी लेवल पे आपस में तालमेल कर सकें। इसके मेंबर्स कौन हैं? इसमें उस समय 3 चीफ्स थे और मैं था, सिस्क, दैट इज चीफ ऑफ आईडीएस। अब इसमें सीडीएस हैं, 3 चीफ्स हैं और चीफ ऑफ आईडीएस भी हैं।
इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और अध्यक्ष कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के होने से, क्योंकि वो पीएमओ का भी हिस्सा है, तो ये एक किस्म से वो पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि एनएसए खुद पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए अध्यक्षता उनकी है। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि गृह सचिव क्यों नहीं है, यानी होम सेक्रेटरी क्यों नहीं है, तो ये मैं भी फीडबैक दे चुका हूं कि यस, मेरी समझ से होम सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होने चाहिए। राइट। इससे पहले कि आप एनीथिंग एल्स, जस्ट लास्ट सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि फंक्शनल लेवल पे अगर मान लीजिए डिफेंस का, जैसे आमतौर पे हर बजट के बाद होता है कि हमारे लिए बजट कम मिला, या कैपिटल बजट कम मिला, या मॉडर्नाइजेशन के लिए जो एलोकेशन है कम है, तो उसमें क्या होता है कि पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई हमें ज्यादा बजट चाहिए, तो फाइनेंस सेक्रेटरी बता देते हैं कि इतना मिल सकता है या इतना नहीं मिल सकता, तो या तो वो हमें कन्विंस कर देते हैं, या फिर हम कन्विंस करते हैं कि उसमें से इतना तो जरूर चाहिए क्योंकि ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है या रिक्वायरमेंट है। तो या बॉर्डर रोड पे जितना आजकल आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी के जरिए इसको फंड्स मुहैया कराए गए थे 2018 में। जो आप बॉर्डर रोड, जो चाइना के बारे में जितने रोड्स पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी में हुआ था। मैं उसमें मौजूद था। मेरा कहने का मतलब है, एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन डिफेंस प्लानिंग कमेटी अदा कर रही है। Right. So, actually outline, let me weigh in with some of my own points on this and highlight. You have said that we don't have a national security strategy. And this point is a sticking point in the public. A lot of people have written a lot about it. I will not go into the merits of having a national security strategy or not. क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वाद विवाद में हम नहीं पड़ेंगे. बट हमारा प्रैक्टिस क्या है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट. राइट, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, जो मेरे हिसाब से वो है बाय कन्वेंशन. बिकॉज बाय कन्वेंशन, आफ्टर फॉर 74 years we have been following some strategy. I mean, just to give you an equivalent, we have a constitution. A lot of people say the Magna Carta is the constitution of the British Empire and UK. Yes. But Magna Carta is not there written anywhere. Yes. It is by convention, right? It's a convention of the kings, Magna Carta. Similarly, our national security strategy is a lot by convention, a lot by tradition, and our experience of the previous wars we have fought and the security situations we have faced, and also amalgam of the wisdom of people who are there in the current thing as to how to conduct the affairs of the nation. And most importantly, which many people miss out, our national security strategy emanates from the Constitution of India. Actually, if you see, the Constitution of India mandates that the armed forces have to defend the territorial integrity of the country, give security to the people, everything. So actually, we flow from there. So why I'm trying to put this across when we're doing all this is people will say, oh, we don't have a national security strategy, so we should be going wrong. We will not go wrong. We have not gone wrong so far. But that debate I will not get into. Then the importance of the Defense Planning Committee with General Satish जो उन्होंने बताया है, ये एक functional committee है जो which plans for the permanent aspects of defense and the long-term issues of defense. And of course, it also caters for emergent situations. It is thing, but this is a standing committee which has a long-term commitment for the defense of the country. It has to plan for defense, and defense planning, जैसे इन्होंने बताया, like roads and all, it doesn't happen overnight. It is not a reflexive planning. It is a proactive planning for the next 30-40 years. So that is a very important committee which has come into being in 2018, right? Which उससे पहले नहीं था हमारे पास, ये थोड़ा कमी थी. और ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी एक खड़ी बन जाती है between the ministerial level thinking and decision makers and those who have to execute actions on ground, right? ये नया खड़ी बन गया है at inter-service level to carry forward affairs. Am I right so far, General Dua? अगर इसके बारे में और कुछ बात करना चाहते हैं तो पता करिए और आगे जा सकते हैं.
बिल्कुल, यू आर राइट। डिफेंस प्लानिंग कमेटी एक ब्रिज बन जाती है जो हाईएस्ट एपेक्स लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बीच में। राइट। तो अभी ये हमने हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक। अब ये बताएं, वी हैव ऑल लर्न कि भाई थिएटर्स होने हैं, एक नॉर्दर्न थिएटर होगा, एक वेस्टर्न थिएटर होगा और मैरीटाइम थिएटर होगा। ये अखबारों में भी आया है। कुछ बोलते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर्स, कुछ बोलते हैं मैरीटाइम। ये मैं मतलब उसका आकार बहुत बताते हैं, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये जब नए 3 थिएटर आएंगे, इनका पूरा जो आजकल का कमांड एंड कंट्रोल और ये जो नया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में क्या फर्क आएगा, इसका क्या कोई आधार के ऊपर हम करेंगे या कैसे करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा आप चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखें, सन 1962 में 1962 ऑपरेशंस में आर्मी ने एयरफोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक के लिए किया, ऑपरेशन में नहीं किया। 65 में भी बहुत कम किया। कारगिल की लड़ाई में हमने देखा कि एयरफोर्स काफी लेट उसमें इन्वॉल्व हुई, और जब इन्वॉल्व हुई तो उसमें काफी खामियां आई। मतलब उनकी तरफ से कोई कमी एयरफोर्स की तरफ से नहीं थी, हमारे आपस की कोऑर्डिनेशन की। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसमें कि ये तीनों अंग इकट्ठे सर्विस कर सकें, ऑपरेशन कर सकें। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये छोटा उदाहरण है, ये टैक्टिकल लेवल का उदाहरण है। ये उदाहरण नहीं है कि थिएटर कमांड ऐसे बनने चाहिए, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता, इससे समझाना चाहता हूं। 2016 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के एयर बेस पर टेररिस्ट अटैक हुआ। सुसाइड टेररिस्ट अंदर आए, 2 दिन तक ऑपरेशन चले। एयरफोर्स की, मतलब एयरफोर्स की जो गरुड़, उसको मदद चाहिए थी। एयरफोर्स बेस की बाउंड्री वॉल के रनवे के उस तरफ आर्मी की एक डिवीजन और एक ब्रिगेड डिप्लॉयड है, बैरक में रहते हैं। उनको सिर्फ दीवार कूद के आना था और यहां पर वो टेररिस्ट को सॉर्ट आउट करते। लेकिन यहां से रिपोर्ट गई दिल्ली, दिल्ली से एनएसजी आ गई उधर, और फिर उसके बाद वो 2 दिन तक लड़ाई चलती रही। मेरा कहने का वो मतलब, अगर अगर वहां का एक थिएटर कमांडर होता, वो आर्मी भी उसके आर्मी भी उसके अधीन होती, एयरफोर्स भी उसके अधीन होती। इस इलाके में नेवी नहीं है, अगर मान लो नेवी भी होती, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। वो आते और बहुत जल्दी ऑपरेशन समाप्त हो जाते। तो मेरा उदाहरण का मकसद ये था कि थिएटर कमांड ऐसा बनेगा, या विश्व में दूसरे देशों में जहां जहां पर है, वो थिएटर कमांड में, एक ही थिएटर कमांड में सभी अंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अमेरिका में तो मरीन अलग से है, तो मरीन या और कोई भी, जैसे उसके अंदर थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक अगर इनपुट चाहिए तो 1-2 डिप्लोमेट पोस्टिंग होंगी। यानी ये सब चीजें वो एक ही थिएटर कमांडर के अधीन होंगी। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इससे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नियुक्त की जाती है। यानी वो थिएटर कमांडर अपने इलाके के लिए या अपने एडवर्सरी या जैसे भी जो चीज बांटी जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबल आर्मी चीफ होगा और वहां पे कमांडर कोई और है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये अकाउंटेबिलिटी, तो एक तरफ से उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको सारे अंग मुहैया करा रहे हैं, उसके सारे फोर्सेस मुहैया करा रहे हैं कि ये आपके पास हैं, आप अपने आप कीजिए, आपको एयर चीफ या आर्मी चीफ या नेवी चीफ से पूछने की जरूरत नहीं है। So I think you made another important point, which many people have. This doesn't come into the normal talking discussion. The business of jointness and theaterization is also a culture. The Yes. culture of communicating with each other and going locally and resolving issues at the local level. If everyone knows that he has to fight the same battle and the line of command doesn't go through Delhi or through a particular headquarter,
and you build parallels, you build bridges at the tactical, the operational, and the strategic levels. If that is done, lot of things will change, and the culture will change as to how to do things together. Don't you think so? Sorry, I disagree with you. Shankar sir, I disagree on that. It is not the question of culture. क्योंकि जो अपने अपने लेवल पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रोज मिलते हैं पठानकोट में, आपस में, चाहे वो सोशली हो चाहे ऑपरेशनली हो, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, एक्सक्यूज मी। लेकिन लेकिन उसका एक लाइन ऑफ कमांड है। लाइन ऑफ कमांड मैंडेट करती है कि वो इजाजत लें एयर हेडक्वार्टर से। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, हमारे पास एक एडवांस हेडक्वार्टर, No, I agree with you. When I say, यानी कि वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं कि हम इनसे मदद मांग लेंगे। I agree. No. What you're saying, I agree with you completely that they can't do it and there's a mandate and all that. But when you put theater commands, the यस, अब thinking होगा। culture, I'm talking उसके बाद, after theater राइट, हाँ, commands come on, उसके बाद the तो जरूर culture, ये यस, the culture of doing things together. That's what I was trying to राइट put राइट, up there. मे बी आई Okay, fine. मिसअंडरस्टूड। No, that's okay. That's not an issue. So that culture will come in. And once you have that culture going, synergy builds up. Right? एक इंटीग्रेशन और synergy build up होता है. Okay. अब उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। हमने तय कर लिया कि थिएटर कमांड आएंगे वगैरह वगैरह। इनका कमांड एंड कंट्रोल किस तरीके से होगा और इसके कोई मॉडल्स हैं तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए, इसके कमांड एंड कंट्रोल हर देश अपनी रिक्वायरमेंट और हालात के हिसाब से अपने मॉडल बनाएगा, और हमें भी कॉपी नहीं करना चाहिए कि अमेरिका का मॉडल कॉपी करना है, या हमारे को इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का मॉडल कॉपी करना है, या चाइना का मॉडल कॉपी करना है। हमें अपना मॉडल बनाना चाहिए। हम दूसरों के मॉडल से जरूर सीख सकते हैं। राइट। तो अगर दूसरे के मॉडल से सीख सकते हैं तो हम थोड़ा उन दो मॉडल्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाउ डू वी दिस थिंग। सो लेट मी राइट, उदाहरण के तौर पर पहले हम लेते हैं चाइना का मॉडल। चाइना का मॉडल में उनके पास 5 थिएटर कमांड है। ये मैं आप सब लोगों को जो देख रहे हैं इनको हमने पहले भी बता दिया। एक वेस्टर्न थिएटर है जो तिब्बत को पूरा कवर करता है, एक सदर्न थिएटर है, एक ईस्टर्न थिएटर है, एक नॉर्दर्न थिएटर है और एक सेंट्रल थिएटर है। इनके 5 थिएटर है और इनका ऑर्गेनाइजेशन और इनका कमांड कंट्रोल किस तरीके से होता है मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे इसको मैं और थोड़ा बड़ा करूंगा, आई टेक अस आउट ऑफ द पिक्चर। The highest body in China is the Central Military Commission headed by Xi Jinping. Right? It doesn't have a cabinet committee on security. It has got a Central Military Commission. Under the Central Military Commission, it has its own staff and all that which organization is given. But if you see in the second tier, you see the theater commands. The 5 theater commands come under the Central Military Commission. Then, of course, you have the services and support forces and you have paramilitary forces and all that on the side. But these 5 theater commands are under the Central Military Commission. Everyone else is feeding into and helping the theater commands or to function, and they carry out the operations. The others are force buildings and general logistics or capability building and decision making. And in actual practice, these 5 theater commands are given direct orders by none other than Xi Jinping. And at best, the vice chairman through the vice chairman. Okay, so this is the Chinese model. Now let us look at the American model. In the American model, they have global commands, right? They have the, you know, they have the commands as I've shown out. They have the Africa command, the Indo-Pacific command, the Western command, the Southern command, right? And all these commands. Now, in their system, the command and control is slightly different. वो क्या है? In their system, the unified commands, they call the unified command. The unified commands come under the Secretary of Defense, direct.
they are they are not under the president. And then and over above that, the president. So the line of command for this theater command is President, Secretary of Defense, Unified Commands. The Joint Chief of Staff and the military departments of the Army, Navy, and Air Force work to help the Unified Commands under the Secretary of Defense. And the Joint Chief of Staff, which is something like the CDS for us, works along with side with the National Security Council in advising the President and the Secretary of Defense. So the two models are slightly different. There, the theater commands are under the Central Military Commission in China and under Xi Jinping and the Vice Chairman direct. Right? Here also they are direct, but under the Unified Commands are under the Secretary of Defense and the President. In that command, the Secretary of Defense or the Vice Chairman in China is not in the line of command. It is the Chairman, Central Military Commission. The Chinese don't have someone like the Joint Chief of Staff who is in an advisory role, right? But in here, there is a Joint Chief of Staff, the Army Chief, the Navy Chief, and the Air Force Chief, and the Marine Chief come like this under the Chairman Joint Chief of Staff for many issues, in fact, for most issues, right? And they give advice. The Joint Chief of Staff Committee, it's called the Joint Chief of Staff Committee, gives advice to the President and the Secretary of Defense and alongside with the National Security Council. So there's a subtle difference. ये दोनों चीज को देखते हुए, my question is, how do you visualize the command and control in our case panning out, or what are the options we have? Of course, we can always say we have the Chinese option and the American option, but हमारा भी खुद का कुछ experience है, हमारा भी कुछ tradition है. इसके लिए ऐसे से how do you think our thing will pan out? देखिए, पहले तो मेरी समझ से जो अमेरिकन मतलब कॉम्बेटेंट कमांड्स हैं, कॉम्बेटेंट कमांड जो हैं वो, जिनको आपने यूनिफाइड कमांड कहा, कॉम्बेटेंट कमांड जो हैं वो पूरे विश्व को कवर करते हैं. तो अफ्रीका कमांड, सेंट्रल कमांड, इंडो पैसिफिक, वो अलग. हम इंडिया उनके हिसाब से इंडो पैसिफिक कमांड में आता है. अब हमारे लिए वो कमांड्स, थिएटर कमांड, यूनिफाइड कमांड, कॉम्बेटेंट कमांड, जो भी बोले, वो मॉडल लागू नहीं है, क्योंकि हमने पूरे विश्व को कवर नहीं करना है. चाइना की तरफ देखते हैं तो चाइना ने जो उनके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल थिएटर हैं, ये थिएटर्स, हमारे थिएटर कुछ कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि हम भी अपने देश के अंदर ही अपने थिएटर बनाएंगे. मसलन उदाहरण के तौर पे हम बना सकते हैं कि एक हमारा थिएटर चाइना के लिए, एक थिएटर पाकिस्तान के लिए, एक थिएटर मैरीटाइम के लिए. तो ऐसे अगर हम मान लीजिए अपने थिएटर बनाते हैं, तो लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो कमांड कंट्रोल मॉडल है वो हमारे लिए, मेरे हिसाब से चाइना का कमांड कंट्रोल मॉडल हमारे को सूट नहीं करेगा. मिलिट्री कमीशन और वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है उसमें. हमारे को कमांड कंट्रोल मॉडल, जो अमेरिका कमांड कंट्रोल मॉडल है, कुछ पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ लगभग उसकी तरह होना पड़ेगा, जिसमें कि सीडीएस जो है वो एडवाइजरी कैपेसिटी में होंगे, लेकिन कॉम्बेटेंट कमांडर्स या थिएटर कमांडर्स, जॉइंट यूनिफाइड इंटीग्रेटेड थिएटर, हमारे इंटीग्रेटेड थिएटर बन रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जब जैसे भी बनेंगे, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मैंने बात की थी, वो जिम्मेदारी उनको दी जानी चाहिए. मेरी समझ से ऐसे प्लानिंग है कि उनको दी जानी है. डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी होता है कि आप सारा कमांड एक के अंदर, एक ही आदमी में, एक ही सीडीएस, एक जैसे इनका जो आपने स्लाइड दिखाई है, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, एक आदमी में सेंट्रलाइज नहीं करते हैं. तो हमारा कमांड कंट्रोल में ऐसा होगा कि थिएटर कमांडर जो है वो, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर, वो हायर लीडरशिप को वो जिम्मेदार है अपने थिएटर के लिए, और उसको हम वो सब कंपोनेंट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लैंड, सब कंपोनेंट्स मुहैया कराएंगे, अवेलेबल करेंगे. तो मोटे तौर पे मेरे हिसाब से हम इन दोनों मॉडल के बीच में
अपना एक मॉडल चुनेंगे। So, uh, okay. So, हमारा model will be something between Chinese model and the American model. Okay. So, which means what you're saying is in some form the theater commanders will they be under the CDS or they'll be directly under the MOD or rather देखिए the RM? देखिए थिएटर कमांडर्स जो हैं वो डायरेक्टली रक्षा मंत्री से इंटरेक्ट करेंगे। जिम्मेदारी उसकी मान, अच्छा सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि हमने चीन के लिए एक थिएटर बनाया, पाकिस्तान के लिए एक थिएटर बनाया, हमारी ज्योग्राफी भी ऐसी है और एडवर्सरी भी ऐसे हैं, और मैरीटाइम यानी कि साउथ में मैरीटाइम के लिए एक थिएटर बनाया। इसके अलावा मैं उनकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, साइबर स्पेस, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेस, Yeah, वो तो लॉजिस्टिक कमांड होगा, लॉजिस्टिक वो सब होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम 3 कॉम्पिटेंट थिएटर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं। तो वो थिएटर कमांडर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा अपने इलाके के लिए, और अगर वो पूरी तरह से जिम्मेदार है तो आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ क्या करेंगे? आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ जो हैं वो, उनका काम होगा टू यूज द ऑस्ट्रेलियन टर्म, ऑस्ट्रेलिया में ये टर्म यूज की जाए, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस में ये टर्म यूज की जाती है, रेज ट्रेन सस्टेन। ओके। वो रेजिंग करेंगे यानी रिक्रूटमेंट रेजिंग, वो अपने फोर्स ट्रेन करेंगे यानी ट्रेनिंग करेंगे, हर लेवल पे ट्रेनिंग। ये नहीं कि सिर्फ रिक्रूट की ट्रेनिंग कर दी या ऑफिसर की ट्रेनिंग कर दी, उसके बाद हर लेवल पे, जैसे हम जूनियर कमांड, सीनियर कमांड, सेक्शन कमांडर लेवल कोर्स, वेपन कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं भारत में और विदेश में, तो ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग एक्सरसाइज कई चीजें करेंगे, वो ट्रेनिंग उनका काम है। और सस्टेन यानी कि एक फोर्स को सस्टेन करने में उसमें मॉडर्नाइजेशन भी शामिल होती है, जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसकी रिप्लेनिशमेंट भी शामिल होती है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन भी शामिल होती है, और बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिस्टिक है, ये सब आप पूरा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। फोर्स डेवलपमेंट पूरा उसका डेवलपमेंट और सस्टेनेंस मतलब उसका लॉजिस्टिक्स एमिनेशन बनाना, ताकि कल के दिन जैसे रशिया और यूक्रेन जैसे ये लड़ाई हो गया 1 साल के लिए, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट थिंग्स। या आई एम विद यू कंप्लीटली। वो आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ जो है वो फोर्स प्रोवाइडर बनेंगे, और जो थिएटर कमांडर्स हैं वो फोर्स यूजर बनेंगे। और जो जैसे हमारा जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जो हाई टेबल है, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में उस वक्त फिर आएंगे सीडीएस के अधीन, सीडीएस के नीचे वो तो चेयरमैन है, सीडीएस के नीचे होंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स, द चीफ ऑफ आईडीएस, और तीनों या चारों जितने भी 4-5 थिएटर कमांडर बनेंगे, इंक्लूडिंग साइबर स्पेस, वो जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेस वाला, वी आर टॉकिंग द मेन थिएटर कमांड। नहीं, वो उनका थिएटर कमांडर अगर एक होगा तो वो भी इसमें शामिल हो गए। तो आप जो बोल रहे हो कि हमारा जो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी विल बी अ वेरी पावरफुल कमिटी, जहां प्लानिंग भी होगा और एग्जीक्यूशन भी होगा। तो इन विच जो आप बोल रहे हो, द थिएटर कमांडर will also be involved in planning to some extent, right? I wouldn't say he's involved in the planning to some extent. He's in the loop of planning so that he knows what is available or not. And the Army, Navy, and the Air Force chiefs and the CDS, completely being force providers, still are in the picture of what is happening on ground. So you're looking at good integration at that level. देखिए, ऑल्सो ये भी बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जैसे आपने पहले कहा था कि वो, मैंने भी कहा था, हम दोनों ने कहा कि वो सीडीएस जो है वो एडवाइजर होगा। मान लीजिए एक विदेशी ताकत के साथ हमारा एक मसला होता है, तो उसमें थिएटर कमांडर जो है एक सलाह देता है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये डिप्लॉयमेंट आगे करनी चाहिए, या ये हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। आप मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे को उनके पास ये प्लेटफॉर्म है, हमें ये प्लेटफॉर्म चाहिए, वो तो थिएटर कमांडर बोल देता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मुहैया कौन कराएगा? अगर वो एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स चीफ कराएगा, या वो कहेगा कि हमारे को मान लीजिए ये डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, तो फिर लीडरशिप, क्योंकि वो लीडरशिप जो है वो एक्सपर्ट्स नहीं है, चाहे वो रक्षा मंत्री है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, फिर वो एडवाइस मांगेंगे सीडीएस से कि आपकी क्या राय है। सीडीएस अकेला राय नहीं देगा,
वो अपने इनके चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से की एडवाइस पे राय देगा। तो उसमें कौन शामिल है? वो वाला थिएटर कमांडर भी शामिल है, लेकिन 7 लोग और हैं। तो करेक्ट। उनकी राय, उनकी एडवाइस, ऑपरेशनल एडवाइस, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सलाह लेता हूं, मतलब एक ऑपरेशनल चीज है। तो अगर आमने सामने बैठ के लोग बात, तो वो यकीनन आपस में बहुत डिस्कशन करेंगे, और सबका बहुत तजुर्बा है। तो ये एक अच्छा तरीका है सही नतीजे लेने का। तो Yeah, ऐसा I'd like to स्ट्रक्चर। highlight. No, no, I completely agree with you. In fact, I want to highlight one major issue. What people have to understand. It is very easy to say, let's change to the Chinese model. It's also very easy to say, let's go to the American model. But you have to understand one thing. We've never had the experience of these things. The theater commands will be new, the theaters will be new, the communication will be new, everything will be new. So and in this process of change, it's a huge change. And in this process of change, we cannot let our guard down at any given point of time. And in बहुत the process, very सॉरी। important. Yeah, I completely agree with you. You know, what you're saying, I completely agree with you. We cannot let our guard down at any point of time, because at any point of time, if anything happens, we have to respond. And the nation will be more keen, that the expectation will be more, because everyone will think कि भाई थिएटर आ गया तो सब कुछ हो जाएगा ठीक ठाक. But थिएटर आ गए हैं, but उसका आकार आ गया, और उसका it is not grounded in, it takes time. क्योंकि एक बच्चे पैदा करने के लिए भी 9 महीने लगता है, थिएटर आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, right? So in this period of transition, there has to be a body which has to sit together, all of them, and think together and act together. आगे किस तरीके से वो आकार बदलेगा वो एक्सपीरियंस के ऊपर है. But I think what you said is very logical, that we need to have a so in our case, the joint chief of staff committee is going to be pretty strong. No? बिल्कुल। हालांकि वो एडवाइजरी कैपेसिटी में होगी, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होगा। मैं Yeah. एडवाइजरी कैपेसिटी इसलिए कह रहा हूं कि कॉम्बिटेंट कमांडर को, थिएटर कमांडर को हमेशा वो, अगर आप मान लीजिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एक लेयर बना दें कि वो उसके अधीन हो जाएगा, तो फिर वो एक और एडिशनल लेयर बन जाएगी। Yeah, he's not a layer now. हायरार्की और इंक्रीज हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी हायरार्की और इंक्रीज हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। So for operational purposes, the theater commanders will be answerable to the Raksha Mantri. जी, Right? Right. So they have the independence of operations, but that is with the provision that they got everything through the Joint Chiefs of Staff, for which they are party already. जी, So they shouldn't have a problem. They shouldn't have a problem to be this thing. And of course, the 3 chiefs or the CDS will always be there next to the political hierarchy. And right. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं. अगर आपको याद है 2020 में जब ईस्टर्न लद्दाख का मसला हुआ था, तो when the Prime Minister went to Ladakh, who was next to him? General Bipin Rawat was next to him. Yeah, and General Naravane was also there, and the GOC&C Northern Command was there. GOC&C Northern Command was a theatre commander. The CDS was also there next to the Prime Minister. The answerability of the Northern Theatre Commander was to the Prime Minister on that day when he was there, and through the CDS. So we've had this great experience, जो सब सोचते हैं हमारे पास experience नहीं है. And I'm sure this Eastern Ladakh experience would have taught us quite a bit in refining our ideas. Your views? हाँ, एब्सोल्युटली। हमने ईस्टर्न लद्दाख में, देखिए, लड़ाई में ये चीजें उभर के आती हैं। हमारे पास थिएटर नहीं है, लेकिन 1971 ऑपरेशन जो Yeah. है, ये एक शानदार मिसाल है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के समन्वय की। मतलब इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कैसे किए जाएं, वो बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने दूसरे ऑपरेशंस गिनाए पाकिस्तान और चाइना के साथ, जिसमें जो अच्छे उदाहरण नहीं है, लेकिन 1971 ऑपरेशन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो लड़ाई में ये चीजें उभर के सामने आती हैं, लेकिन हमारी जो इंटीग्रेशन है या वॉर फाइटिंग मशीनरी है, इट कैन नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब वो हमारे को प्रोसेसेस चाहिए। ये नहीं कि ये और जनरल दुआ और जनरल शंकर की आपस में अच्छी दोस्ती है तो हम आपको फोन करके बोल देंगे तो आप हर चीज मान जाओगे, वो बात नहीं है। ये
हम एक दूसरे को ना भी जानते हो, हमारे प्रोसेसेस ऐसे होने चाहिए, हमारी इंटीग्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो वॉर फाइटिंग मशीनरी एक एफिशिएंट मशीन हो। या नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस, और जो आम तौर पर आजकल पेपर में भी आ गया, क्योंकि ये वाद विवाद का, क्या ये थिएटर कमांडर्स 4 स्टार्स होंगे या 3 स्टार ही रहेंगे? उसके बारे में आप थोड़ा टिप्पणी दे सकते हो, बिकॉज दे पार्ट ऑफ द जॉइंट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, दोनों साइड हो सकते हैं। जस्ट गिव योर व्यूज एंड देन वी कैन यू नो। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बहस नहीं है। ये नहीं, या आपने जो हाँ, बोल बात किया ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, इसमें कोई जी, बड़ी बहस नहीं है। जो हमने पर अभी ये तक, बहस बनाया नहीं, नहीं, व्हाट आई वांट टू पुट अक्रॉस टू एवरीवन एंड देन विल टॉक, यू टॉक। ये बहुत बड़ी बहस बनाया जा रहा है, हमें ये इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। या प्लीज, सॉरी। देखिए, हमारे आर्मी में हायरार्की बड़ी क्लियर है। अगर आप लाइन ऑफ कमांड डिफाइन कर दें तो रैंक में इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर थिएटर कमांडर वैसे आइडली मैं चाहूंगा, मेरी पर्सनल राय ये है, आइडली मैं चाहूंगा कि थिएटर कमांडर 4 स्टार हों, जैसे दूसरे देशों में भी है। वो इसलिए कि उनकी अथॉरिटी, क्योंकि उनके नीचे 3 कंपोनेंट कमांडर होंगे, लैंड फोर्स कंपोनेंट, एयर कंपोनेंट, नेवल कंपोनेंट कमांडर, मरीन जो भी बोले, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, वो 3 स्टार होंगे। तो अगर वो उनके 3 ऊपर स्टार, 4 स्टार होना उनके ऊपर सही अगर होगा। 4 स्टार होगा, क्योंकि ये तीनों का कमांड है, और वो तीनों अलग अलग सर्विसेज के हैं, इसलिए 4 स्टार। लेकिन मान लीजिए शुरू में एक पहले कदम में अगर सरकार 4 स्टार नहीं अलाउ करती है और अगर 3 स्टार रहता है, मान लीजिए, तो उससे कोई हमें बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। क्यों? आप देखिए, हम जब आर्मी कमांडर है, हमारा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर था, मैं कोर कमांडर था, तो मैं भी लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, आर्मी कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेकिन वो तो 3 कोर के ऊपर आर्मी कमांडर होता है, तो उसमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी में फर्क नहीं आ जाता। तो नहीं, there is दोनों, also no, no, what you're saying is right. Let me add on to it. See, the thing is that at आज के दिन, as per current practice and law, the army commander is a promotion. It's not an appointment. Whereas the corps commander in our thing, or any 3 star rank billet, is an appointment. You are promoted as a lieutenant general and then appointed into an appointment as a corps commander or a DG artillery, like I was, and all that, or GOC of some other area or something. But when you are appointed as an army commander, you are promoted as an army commander. true, The same structure, yeah, same structure can be, same similar thing can can go be up worked to out the, for the commander. yeah, but जैसे आपने बोला है, it is better to have a 4 star because theater commander का कुछ मान मर्यादा होगा, और वो उसमें एक फायदा ये होगा, जैसे अपने देश में तो समझ क्लियरली आ जाता है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बना देंगे, रैंक बैज में भी थोड़ा सा मामूली डिफरेंस, जैसे कि हमारे रैंक बैज में थोड़ा सा ओक लीव्स आ जाते हैं, आर्मी कमांडर के थोड़ा डिफरेंस कर देंगे और थिएटर कमांडर बना देंगे। लेकिन जब आप कभी इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए जाते हैं विदेश में, तब तब एक आप वहां पे देखेंगे थिएटर कमांडर, इंडो पैसिफिक थिएटर कमांडर जो है 4 स्टार है। हमारा थिएटर कमांडर, क्योंकि हमारा डीलिंग जो है अगर अमेरिका के साथ होगा तो इंडो पैसिफिक थिएटर कमांडर के साथ होता है, तो फिर हमारा थिएटर कमांडर 3 स्टार है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हम देखते हैं, इसमें फर्क पड़ सकता है। मैं फंक्शनैलिटी में फर्क नहीं आएगा, लेकिन मेरी राय ये है कि 4 स्टार होना चाहिए। अगर 3 स्टार होगा भी तो उसमें हमें अंतर नहीं पड़ेगा फंक्शनैलिटी में। Yeah, I think we've think so. Important things. If I recap, is there any other issue you want to discuss, or should we wrap it up and take some questions? Yes, we can wrap it up. I can just add one sentence Yeah, to please. my concluding comment is, जैसे आजकल वॉरफेयर चलता जा रहा है, आजकल बहुत सारे सेंसर्स, शूटर, प्लेटफॉर्म्स, कितने सारी चीजें बढ़ गई हैं। ये वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ टैंक हैं, सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, यहाँ भी ड्रोन्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें आ गई हैं। प्लस इनकी स्पीड बहुत तेज हो गई है, कंप्यूटराइजेशन की वजह से इन सब की स्पीड बहुत तेज है। तो आजकल जो है हमारा जो डिसीजन लूप है वो बहुत हमें छोटा करना है,
बहुत जरूरी है कि आप इमीडिएट डिसीजन ले सकें। ये इतना हमारे पास लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि हम अपने फील्ड से चेन ऑफ कमांड से हुक्म जाएगा, ऑर्डर्स के लिए हम जाएंगे आर्मी हेडक्वार्टर, वो एयरफोर्स वाले एयरफोर्स से पूछेंगे, आर्मी एयरफोर्स चीफ आपस में बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे हम स्ट्राइक अलॉट करते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी डन वेरी क्विकली, और उसके लिए ये थिएटर कमांडर होना बहुत जरूरी है कि फील्ड लेवल पे ही ये तीनों का समन्वय हो जाए, और फील्ड लेवल पे विदाउट लुकिंग ओवर द शोल्डर, यानी पीछे किसी से बात करे बगैर थिएटर कमांडर डिसीजन ले सकता है। Yeah, I think that you've said a very important thing. Like I said, the culture has to change. The culture of our way of fighting has to change. Right. That brings me to a macro point. The macro point is change is afoot. Change and huge change. क्या क्या change है? Change in the higher defense organization. क्योंकि ये प्रधानमंत्री और अपने बाकी जो CCS को भी एक चेंज है कि अगर ये थिएटर कमांड चेंज हो रहा है, थिएटर कमांड सिस्टम आ रहा है, तो उनके लिए भी इज गोइंग टू बी अ कल्चर चेंज. दैट्स वन. Second, the entire Joint Chief of Staff, everything, all this whole story is a new experience for all of us. We have to change. At the lower level, the organizations at the command level, at the operational level, at the theater level, new organizations have to come and new things have to change. It is easy to say that we have to be joint logistics and joint communication, vagara, vagara, vagara. We have invested millions and millions of and crores of rupees into establishing what we have. You just can't break them overnight and change them over. It is not feasible. India can't afford it. So you have to realign. So that realignment will take time. Everything in this system is going to take time. It's going to be time consuming. Why am I telling you all this? Making highlight because many people in the media I say, oh, we are late. हम तो करते नहीं है. इंडिया में होता नहीं है ये. हम बेवकूफ हैं. ये धीरे धीरे होगा. जितना धीरे होगा उतना अच्छा है. क्योंकि इसके साथ साथ please remember there's a proxy war on against Pakistan going on. Our northern neighbor is making eyes at us. There is every second day there's something on the Coco Island or Kamban Tota or Indian Ocean or in Gwadar area. कुछ तो कुछ हो रहा है. So all these three new theaters which are coming are going to have their hands full from day one, right? In all this, एक चीज I repeat, which cannot be slipped, is our national security. एक दिन भी उसमें आनाकानी नहीं हो सकता है. Okay, taking this into consideration, I think we have to be patient, we have to understand, and we have to get into the best organization which suits our existing culture. We have the Chinese model, we have an American model, we have even a Russian model, an Australian model, and also the British model. It's not as if we've just shown two models, but there are other models also. We need to evolve our own model. And I'm sure from what we can make out and what General Dua has so nicely, told us, because he's been in the know of things, that we are going in the right path. So we shouldn't doubt our seniors. We shouldn't doubt our political masters. The thing everyone says, oh यार इनको पता ही नहीं है ऐसे बकवास कर रहे हैं, नहीं होता. Please don't fall in this trap. If you fall in this trap, we are doing disservice to all that thing. Right? That's what I wanted to tell, and that's what this thing. And of course, the next talk I'm going to have is both of us we're going to have is how will the theater commands be organized? Right? We have now spoken of how will they be controlled, what will be their command and control structure. The next thing is how should a theater command be organized, and what are the issues at the theater level. We'll talk of it sometime later down the line. So, can we take some questions at this point? Yeah. Yep. At the outset, I'd like to welcome Abhi as a new member. I'd request more of you to join. I see Krishnaya, Rabit, and I also see Rahul in the back attending. Hi, guys. Okay. Simple question. We'll take a few questions. I'd request you to go through so that we fast so that we can, maximize. Would the entire helicopter fleet encompassing those from the Army, Navy, and Air Force be consolidated into a unified entity under the Joint Theatre Command General? You see, till 1976,
We had only one Air Force. Sorry, we had only one Air Force. In 1976, the Navy took the naval aviation away. They took their helicopters away. Then in 1986, Army Aviation, AROP that time it was called, was formed. So it's a bit of both. A straight answer, yes or no, would be an oversimplification. There are advantages of having one fleet of since you're talking only of helicopters, we could also talk of fixed wings, but helicopters especially, yes, they could be together. But there are also advantages of keeping them with the special force, with their specific forces. So what must be done, at least initially, is to have integrated units. For example, at Siachen, we are flying. We are flying helicopters of all sizes. Air Force is also flying, and Army is also flying to serve the same troops at the LOC or the Siachen Glacier. So, similarly, so these are the units which could perhaps be integrated, where you have Air Force pilots who have more domain knowledge of the aviation issues, but you also have Army pilots who have more knowledge of the ground situation. And slowly we can learn from each other. In fact, it will interest you to know that we even have Navy pilots flying with me. When I was Corps Commander Yeah, in Kashmir, we are yeah, Navy pilots. They come on deputation and they fly with us to just yeah, gain experience. So, yeah. I think It, it will. yeah, and not only that, as warfare has gone, scope of warfare has gone, new weapons have come, some specialized tasks are there, and those specialized tasks are best done by that Army, Navy, or Air Force. So, and then there are generalized tasks. So, we have a happy mix at this point of time, and maybe it will get refined once this theater command system comes in. It will get refined. I'm very confident of that. Okay, next question is why can't northeastern region have a separate kind of a tri-service command like Andaman? Look, Amulya, I'll not get into this because this is something which is a national decision. We'll leave it at that. And why, when we talk of the next time, we'll answer this in detail to you. Okay. Are theatre commands supposed to be at roughly equal strength or divided according to regional threats? Will the theatre in IOR be inherently larger because of multi-domain? So it is like this. The theaters will cannot be equal. They will be as per requirement. For instance, the IOR now that you said, the Southern Theater or Maritime Theater, Peninsula Command, whatever we call it, it will be larger in Navy component will be larger. For example, the Army component in that will be lesser. Army component will be more against in the mountains against our two other adversaries. So everything will be tailored to the need, operational requirement, and the geographical context. Yeah. Uh, Krishnaya says excellent information and food for thought. Both general's knowledge and experience and dedication towards our country is India is very, very highest level. Every Indian must understand and appreciate it. I put this thing out only to tell everyone that look, our channel is a little different. We are not here for TRPs. We are not here for everything. We want to put across what is good for our country in the simplest and the best possible manner, which every Indian can understand. Right? It is more of awareness, and we, unless most of us understand what we are up to, we cannot progress towards together as a nation. So I'd request more of you to please join in and tell your friends also. Okay. Right. Vishwanathan says, sir, an outstanding discussion for a layman to understand. It is consolidating the tri-service capability under one leadership in each theatre for effective execution of military operation. I'll just reiterate everything, Vishwanathan, and to everyone else. Uh, this is a very complicated subject, which we are trying to make it as easy as possible. This is the third program on this. I'm going to have a fourth and fifth program where the whole business of theater commands, higher defense organization, command and control, and everything will be made easy, including the smart command thought process that Air Marshal Sachdeva put across to you. Okay, right. Let's see what does he say.
Uh, Lieutenant General Dua, sir, in 1977, according to history known by us, it was totally personality driven. Uh, Directions like General Sam, General Jacob, General Aurora have taken some bold decisions. Is it true? Uh, in fact, you are right, and that's what I also said, that it was personality driven, and we cannot war fighting cannot be left to the goodwill between people, and that is why we need to have theater commands. 1971 is a very good example of all three services fighting together, but the personalities that time were strong and they were very enmeshed with each other. uh, at the expense of reputation, we don't want the personalities to dictate the integration. It should be process driven, and their hierarchy should be drawn, the line of command should be drawn clearly. Yeah. Uh, Jai Hind, General Shankar and Dua. This is the best discussion on command and control of joint theater commands. Two lieutenant generals, highly decorated, are sharing their invaluable knowledge and experience. Awesome. Thank you. Our Thank you. aim is this, right? When you come on gunner shot, you get the best. Because the people of India, deserve the best. Okay. Rajiv. Yeah, Rajiv, who is responsible for the defense of India? The defense secretary, not a good model. Prefer the CDS be responsible for defense of India. 1/2. Okay. Cannot follow the US command channel since the unified combat commands are not responsible for defense of India, but the defense in the US influence in respective regions. Well, Yep. I'm glad that Rajiv has come. Rajiv did the first thing with us. So over to you, Satish. Then we'll, yeah. So let me take the second part first. Yeah, Cannot follow. We've also said this. We can't follow their command because that is not applicable to us. We don't have any intentions beyond our borders, and that is why I said our model of theaters will be more akin to the Chinese model. Only whereas command and control is concerned, that's a communist dispensation, whereas we will be more democracy aligned, and so our model of command and control will certainly not follow the Chinese model, and we will adapt our own learning, taking good points from the American model. First part of the yeah. question, just can you just show that again? That's a I very will, yeah, yeah. who's responsible. Let me explain this for the viewers. There is sometimes a sort of perception saying that the defense secretary is Right, right. responsible for the defense of India. Now, let me explain why that comes about, why that wrong perception comes about. And I'm sticking my neck out to say it is a wrong perception. It comes like this. There is the government of India. How does it run? It runs on something called allotment of business. There are allotment of business rules and transaction of business rules of 1961. The transaction of business rules, the allotment of business rules, they actually say that the government of India will run through ministries. Each ministry will be headed by a minister. Each ministry will be divided into departments. Each department will be headed by a secretary. And the secretary will be responsible for his own department. So I don't think I have to repeat that. It is very simply put, it is like this. So when you come to Ministry of Defense, let's talk before the CDS was appointed. Uh, the Ministry of Defense has 5 departments. Without going into details of DRDO and ex-servicemen welfare and all, there are 5 departments. One is Department of Defense, then Department of Defense Production. Okay, let me say Department of Defense Production, Department of Defense ex-servicemen welfare, Department Defense R&D, and the finance. So if these are the 5 departments, each is headed by a secretary. Now, the Department of Defense is headed by the defense secretary. There are all our secretaries, but he's first among equals between those 5 secretaries. So since the defense word, Department of Defense, he is responsible for his as per the transaction of business rules 1961. He is responsible for his department. So it just
sort of starts to flow that defense secretary is responsible for defense. How can defense secretary be responsible? He's not. This I mean, let me put it. I think now, you having explained it. Ultimately, my view is very clear. The defense of India is the responsibility of the defense minister of India. As simple as that, and the prime minister. And flowing from that, the operational responsibility at this point of time comes down to the CDS. through the CDS to the Joint Chiefs of Staff Committee and down below. So this anomaly needs to be set right. I suppose this will take its own course, and I will leave it at that. Okay. One question is, in case of the need for kinetic action, how long will it take to make the decision to respond? Does the president of India give the order? My simple and straight answer is: look, we are already in operations. No one need tell us. So it's just going up another level. And in case the war is declared, it is the cabinet which takes the decision, and the prime president just okays it. Right? It is a recommendation of the prime minister of India. It's only when the war is declared. For that, has to be this cabinet committee of security has to sit and take a call. And don't worry, kinetic action will start even much before that. Okay. Right. Okay, let me say, Rabindra, US funding Naxal urban NGO judge professor in college, US brainwashing young general by SM app spreading liberal. Who bigger enemy? Rabindra, don't think like this. Why I brought you on is don't think like this and sidetrack. We are talking of a very important thing, so don't sidetrack the whole issue, and don't get caught in these mistakes. Okay, the last question I'll take is, General Sir, the knowledge that you and the rest of the guests share is very informative and helps laymen like us understand on national defense. Jai Hind. Thanks a lot. And last question I'll take is, don't you think a theater command looking for Pakistan and China will be small as compared to maritime command, because it will be looking at Indo-Pacific till African tip? Your views? So when you say small, in what sense? Small, there is It's no task geographical. oriented. It is not geography. If it is to do with the number of bodies or troops or platforms or weapons, so we have to understand in what terms are you saying? Yes, of course, for China and Pakistan, the number of ships allocated will be much lesser than the ships allocated for this side. But as far as air effort is concerned, it will be anyone's guess, because it will depend on the requirement and the operational context. As far as troops are concerned, army soldiers will be much more on the Pakistan and China border than they will be on the maritime front. So it will depend, like I said earlier, it will depend on the operational and geographical construct. It'll be, and the task क्या है, वहाँ threat क्या है, it all depends on that, right? So it's not so, it's don't go by area. In the military, if you go by area, you'll go wrong. It's the task which matters the most. Okay, right? I can give you a personal example, but I'll not do that. Okay, last question. I'll take it on, Satish. We need more channels from military veterans to be available to enhance people's understanding of military purchases and counter the influence of propaganda from those without operational experience. I completely agree with you. Right? That's why I keep saying, please join in. And I'll let me take a pot shot at all of you. यार इसी को, you have one channel, उसी को थोड़ा बढ़ाओ ना आगे. बाकी और चैनल आएंगे तो वो तो they'll also be on a limb without anything. So you have one channel, help it grow, and then people will be motivated. Already Strive EPs, the other channel, Strive Dialogues, has been started by General Dushyant Singh through his think tank. So you can subscribe for that also. So you get a different set of views, and you get a different set of things going there, right? So I am with you, but these are the two channels today which are authentic military channels available to everyone. So please subscribe and look at programs as per your choice. Yeah. Anything else, Satish? I'd like to thank you for Thank your nice comments and nice interjections and interventions. Your final comment, and then we'll say Jai Hind. Thank you for inviting me on the show. And all I would like to say that theaterization or integration is an idea. I won't say is an idea whose time has come. It is. We are already too late. We are the last military standing, a large military. That is, India is the last large military force which is still working in
separate silos. We have to integrate, and there is no escape. It is not a question of if, it's only a question of when. The process has thankfully begun. The government has taken a bold decision to do it. CDS has been appointed, and the progress in this field is more than we know, because it cannot be put out in public domain. And we have to have a little patience, but this is surely steadily happening. Thank you. Yeah. Right. Thanks a lot, Jan Dua. आपने आके बहुत अच्छी तरीके से clarification किया. I hope people have understood. I'm sure people have understood from the comments which I can see. I would like to thank General Rajiv Narayanan for having taken time to go through this presentation. Like I said, we've done three. The first thing on theatre commands I did with him, then followed it up with Air Marshal Sachdeva, today with General Dua. The next we'll do on theatre commands, maybe we'll discuss it out. Maybe General Dua and General Narayanan both will join us, and we'll discuss out what will be the akar of the theatres and what will be the nuances which we have to look at, so that we have more discussion for people to understand. But let me tell you, a lot of things got clarified today, and I thought we were quite simple in putting across everything. I'd request all of you to propagate this video so that everyone understands, and also I'd request more people to join in as members so that that helps everyone. Like I said, to everyone, all these experts who come, I have to start paying. It's a matter of giving them Guru Dakshina. That's about all. It could be a mere 100 rupees, but I have to start paying them. Otherwise, I'm feeling guilty for having taken that time. Right? With this, I'd like to thank everyone. Thank you once again. Jai Hind and good evening. Thank you, sir. Jai Hind.